Okay, so let's start with the SAT orientation session, 4th of July 2022. And this is for basically your August SAT, sorry, October SAT. Okay, we're starting off. This is my profile. I am the CEO of Anis Hussain. It says director over there, but I forgot to update it. I'm the CEO now. And I am an alumnus of IBA, the Institute of Business Administration, Karachi. I'm a pretty old graduate of IBA. I graduated in '99, which is more than 23 years ago. Okay. And I have been associated with Mr. Anis Hussain since 1995, which is when I was doing my preparation when I was as young as you are right now. And I started my preparation for the IBA test. And then I also started teaching part-time because I was good at math. So I started teaching part-time mathematics at Anis Hussain. And eventually once I graduated, I actually pursued a career in the corporate world. I was a banker at Habib Bank. I was an analyst at Procter and Gamble. And then I decided to become a full-time teacher. And I came to Anis Hussain as a full-time partner associate in the year 2002. So it's been over 20 years since I've been here full-time. Um, so that's my profile, but I've already explained that to you. Okay, so we're going to talk about today. We're going to talk about these things. What are the benefits of taking the SAT exam? What are the SAT dates? What is the registration process? What is the SAT format? What is the SAT syllabus? And how do you score the SAT? You need to know these things so that you can then understand how this entire preparation will take place. Okay. Right. Why should you take the SAT? I'm sure you all know that SAT is a very, very useful admission test. You can take it for universities in Pakistan and for abroad as well. And the best time to do the SAT is when you are in your first year of intermediate or A levels. But if you didn't do it then you can always do it in your second year as well. So I'm assuming that many of you have completed your first year of intermediate or A levels and are now in your second year or going to go to your second year. So this is the right time to do the SAT. I hope you've all registered for the test because registration is something that you need to do immediately and urgently. If you don't register for the test now, then you may not find a seat in Karachi and you may have to then go to Lahore or Islamabad to take the test. That would mean an increased cost because you will have to then travel there and it'll cost you time and money both. So I would advise you to register as quickly as possible so that you don't lose any time. Okay. One other SAT. Can you hear me? Okay. So I have a question here from Anusha. She says, is your mic on? Yes, Peter, my mic is on. Yes, my mic is on. Aisha, can you hear me? I have Aisha and Anusha. So Aisha says that she can hear me. Okay, so Aisha's my mic is on. So let me just respond to her. Right. Okay. So the SAT dates are the following. August 27th is the first date. October 1st is the second date. And then you have a date in December, one in March, one in May, and one in June. फर्क ये है कि as you can see ये जो पहले तीन SAT एग्जाम्स हैं ये आपके रेगुलर SAT एग्जाम्स हैं और जो अगले तीन हैं ये डिजिटल SAT एग्जाम्स हैं और डिजिटल SAT क्या है I'll go to that in a little while but आप में से कितने लोग इसी साल 2022 में ही दे रहे हैं अक्टूबर में या दिसंबर में raise your hands so you're all taking it this year okay which means कि आप डिजिटल SAT नहीं लेंगे डिजिटल SAT आप उस वक्त में लेंगे कि अगर आप मार्च में या मई में या जून में आप देते हैं right so I'll explain to you okay great Anusha good to hear that it's working so the idea is that okay, so the idea is that you want to make sure that you take the test now rather than later because the earlier you do, the better it is. And then you always have the chance of taking it later again. By the way, there's no limit. You can take the SAT 5 times if you like, right? But obviously, most people take it once or twice. You know, you don't want to take it too many times
बिकॉज ऑल योर स्कोर्स गेट रिपोर्टेड। तो आप कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइम अच्छा स्कोर आ जाए। आप बार बार टेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो कोई खास फायदा नहीं होगा उसका। इवेंचुअली हाँ, ये जरूर होता है कि 2 दफा कर लेते हैं, दैट्स नॉट मेजर इशू, बट कोशिश करें कि 2 से ज्यादा ना करें। 4 या 5 दफा करना इज पॉइंटलेस। ओके, राइट, वर्स्ट केस सिनेरियो में आप 3 दफा कर लें। सो डिजिटल एसेटी क्या है, मैं आपको बाद में इसका बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एसेटी एंड द डिजिटल एसेटी। यू विल लर्न दैट एज वेल। ओके जी, राइट। सो नाउ what is the SAT registration process? How many of you have already registered? Registration करवा ली है? Okay, just one person. The rest of you have not registered. So kindly visit collegeboard.com today and register today. आज से delay नहीं करना because आपको सीट नहीं मिलेगी. Okay, आपने कब देना है टेस्ट? अक्टूबर में. अक्टूबर, 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 right? So आपको सीट नहीं मिलने वाली अगर आप registration नहीं कराएंगे तो. You will run out of seats. So please register immediately, okay? Because कराची में seats बहुत जल्दी खत्म होती हैं, okay? So आज जाएं, फौरन से registration करवाएं और अपना registration complete कर लें, okay? Now make sure that you make an account. You make sure that you use the exact spelling of your name as it is in the passport. You all have the passport? If you don't have a passport, raise your hand. You all have a passport? Okay. Do you know the passport is valid? That's the second question. Have you checked the validity? एक्सपायर तो नहीं हुआ, घर जाके चेक कर लीजिएगा अगर चेक नहीं किया हुआ तो। तीसरी बात, जैसे नाम लिखा हुआ है आपके पासपोर्ट में वैसे ही आपने नाम जो है ना वो रजिस्ट्रेशन में लिखना है। ओके, सो अगर आपका नाम जो है वो इमरान खान है फॉर एग्जांपल, राइट, तो जैसे वो लिखा हुआ है पासपोर्ट में वैसे ही आपने उसको लिखना है अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर। अगर कोई भी नाम में डिफरेंस होगा, स्पेलिंग में डिफरेंस हो जाए या प्लेसमेंट में डिफरेंस हो जाए तो आपके पास पॉसिबिलिटी है, बहुत बहुत हाई चांस है कि आपको टेस्ट के दिन आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आपको अलाउ ना करे। वो कहेगा कि यार आपके पासपोर्ट में और नाम उसमें एडमिशन टिकट में डिफरेंस है नाम का। आप उसको जितना भी समझाएंगे कि जी मैंने पासपोर्ट में ये लिखा था, यहाँ पे ये लिखा है, बात तो एक ही है वगैरह वगैरह, मेरा शनाख्ती कार्ड देख लो, दे विल नॉट टेक अ लुक एट इट। दे विल से भाई योर पासपोर्ट नीड्स टू हैव द एग्जैक्ट सेम नेम एज यू रजिस्टर्ड विद SAT। यू अंडरस्टैंड दैट? सो ये बड़ा जरूरी है। And then you need to pay through a credit card, which is $104 cost for the SAT exam. So you can use a credit card. Debit cards usually don't work. Credit cards do work. If you don't have a credit card, or if your parents don't have a credit card, you can always borrow a credit card from a family member, a friend. वो जरूरी नहीं क्रेडिट कार्ड आपका अपना हो, आपके वालिद का हो, किसी और का भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आपको पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट, राइट। ये एक important instructions है, caution, register carefully. Why is it written in red and why has it been highlighted? Because it's a mistake that a lot of people make. For example, मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पासपोर्ट में, पाकिस्तान के पासपोर्ट में 2 कॉलम्स होते हैं नाम के, एक सरनेम होता है और एक गिवन नेम होता है। ओके, दैट्स हाउ द पाकिस्तानी पासपोर्ट इज। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो इस तरह से होगा। ओके, तो इन माय पासपोर्ट माय सरनेम इज गिवन एज गफ्फार and my given name is Mohammed Salman. Okay, now जो SAT registration है उसमें 3 कॉलम्स होते हैं, ओके, नाम के। एक होता है फर्स्ट नेम, एक होता है मिडिल इनिशियल और एक होता है लास्ट नेम। सो मैं अपना नाम SAT रजिस्ट्रेशन के कैसे लिखूंगा? मैं अपना फर्स्ट नेम पूरा मोहम्मद सलमान लिखूंगा। ओके, यूजुअली इतनी जगह होती है कि फिट आ जाता है, अनलेस आपका नाम बहुत ही लंबा है तो वो फिट नहीं आएगा, बट यूजुअली इतनी स्पेस होती है कि आराम से मोहम्मद और सलमान पूरा पूरा उसमें फिट आ जाएगा। ओके, मिडिल इनिशियल को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और लास्ट नेम में मैं गफ्फार लिख दूंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? सो देन दिस विल मैच माय पासपोर्ट। ओके, लोग गलतियां करते हैं कि अगर मोहम्मद है, मोहम्मद सलमान है तो फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिख दिया, मिडिल इनिशियल में वो S डाल देते हैं। ओके, बिकॉज वो सिर्फ इनिशियल लेता है, मिडिल नेम नहीं लेता, वो सिर्फ मिडिल इनिशियल लेता है। अगर वो मिडिल नेम पूरा ले ले तो मसला नहीं है, बट वो मिडिल इनिशियल ले रहा है, सो आई कैन ओनली पुट S ओवर देयर, so then that's not my complete name, so then they won't accept it. You understand that? So पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिसाब से आप डालें ताकि आपको परेशानी ना हो। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे हालांकि गलती है, उनको आपको डिसअलाउ नहीं करना चाहिए, अगर आपके पास वैलिड आईडी मौजूद है तो वो डिसअलाउ करते हैं और लोग परेशान होते हैं और आपका टेस्ट की फीस भी ज़ाया हो जाती है, आपकी सारी एफर्ट भी वेस्ट हो जाती है। So please make sure that you register properly and carefully. Got it? Okay. If you have any confusion, then you can always WhatsApp me and I will tell you. I'll give you my contact number. You can WhatsApp me and you can send me a picture of your passport. मैं बताऊंगा आपको नाम कैसे डालना चाहिए। तो वैसे तो बड़ी आसान सी चीज़ है, should not be a problem. By the way, आपकी रजिस्ट्रेशन के दौरान पासपोर्ट नंबर नहीं मांगा जाता। Okay, so you don't have to put your passport number over there.
आपसे पासपोर्ट की तस्वीर भी नहीं मांगी जाती कि आप पासपोर्ट अपलोड कर दें, कुछ भी मांगा जाता है। ये पासपोर्ट आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के दिन लेके जाना है फॉर योर आईडी, करेक्ट, राइट? ओके, व्हाट इज द एसएटी फॉर्मेट? एसएटी के अंदर 4 सेक्शंस आते हैं, और वो जो 4 सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सिवाय चंद मैथ के प्रॉब्लम्स जो कि मैथ के सेक्शन के एंड में आते हैं। ओके, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं, राइट? आपके पास नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती। ओके, और उसके अलावा मैथ के जो 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में कैलकुलेटर अलाउड है और एक में अलाउड नहीं है। सो 2 सेक्शंस हैं, वन विद अ कैलकुलेटर, वन विदाउट अ कैलकुलेटर, राइट? सो टोटल 4 सेक्शंस हो गए आपके। उसमें जो पहले 2 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है, दूसरा आपका राइटिंग एंड लैंग्वेज का है, फिर तीसरा सेक्शन मैथ का है विदाउट कैलकुलेटर, छोटा सेक्शन है, और जो चौथा सेक्शन है वो विद कैलकुलेटर है, थोड़ा लंबा सेक्शन, राइट? सो 2 इंग्लिश एंड देन 2 मैथ, राइट? इंग्लिश में क्या आता है, इसको आप वर्बल सेक्शन कह देते हैं। वर्बल सेक्शन का जो पहला सेक्शन है वो रीडिंग का है, और उस रीडिंग सेक्शन के अंदर बहुत सारी रीडिंग करनी है आपको। ओके, आपके पास 5 पैसेजेस होते हैं, 5 लंबे चौड़े पैसेजेस होते हैं, तकरीबन 90 लाइंस 100 लाइंस के पैसेजेस होते हैं। और कुछ पैसेजेस में कुछ डेटा भी होता है। डेटा से मुराद ये है कि उसके अंदर वो आपको ग्राफ्स दे देते हैं, बार चार्ट्स दे देंगे, लाइन चार्ट्स दे देंगे, कोई टेबल्स दे देंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक दैट इज डिस्कस्ड इन द पैसेज। और फिर आपको जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, and some questions will be on the basis of what is given in the graphs, in the line chart, bar chart, table. So you need to understand how to read those charts as well. आपने एक बार चार्ट को कैसे पढ़ना है वो आपको आना चाहिए, एक लाइन चार्ट आप कैसे पढ़ेंगे वो आपको आना चाहिए। So it's a bit of math, हल्की फुल्की, along with the reading part. Okay? रीडिंग में पैसेजेस आपको किस तरह के आते हैं? आपको पैसेजेस आएंगे यूएस हिस्ट्री के ऊपर, आपको पैसेजेस आएंगे सोशल साइंसेस के ऊपर, आपको पैसेजेस आएंगे नेचुरल साइंसेस के ऊपर, आपको पैसेजेस आएंगे इंग्लिश लिटरेचर से। सो जो पहला पैसेज होता है वो हमेशा कोई ना कोई लिटरेचर से होता है। ओके, हो सकता है कोई पुरानी 200 साल पुरानी किताब हो, उसका कोई पैसेज ले लें, हो सकता है कोई रीसेंट बुक हो, उसका पैसेज ले लें, बट इट्स गोना बी फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम सम पीस ऑफ फिक्शन, जिसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, उसकी कोई ना कोई स्टोरी होगी, उसका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट होगी, और उसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट पैसेज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लिटरेचर, और बाकी 4 पैसेजेस जो हैं उसमें आपके पास साइंसेस, सोशल साइंसेस और यूएस हिस्ट्री आ जाता है। ये जो 5 पैसेजेस हैं ये सारे सिंगल पैसेजेस होते हैं सिवाय एक के। एक पैसेज ऐसा होता है जो यूजुअली या तो साइंस के ऊपर होगा या सोशल साइंस पे होगा, लिटरेचर वाला नहीं होता वो। उसमें 2 पैसेज होते हैं, वो एक नहीं होता, वो 2 पैसेज होते हैं, राइट? जैसे पैसेज 1 एंड देन जैसे पैसेज 2। ओके, एंड आपको फिर उन दोनों पैसेजेस की बेसिस पे सवाल पूछे जा रहे होते हैं। वो पैसेजेस कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, बट वो भी कोई बहुत छोटे नहीं होते। So instead of the regular 90 line passage, you might get a 60 line passage one and 60 line other. So you end up reading a lot more because you have to read 2 passages and both the passages contain a lot of content. और वो जो passages हैं वो आपस में linked होते हैं। So for example हो सकता है कि passage 1 और passage 2 दोनों global warming के ऊपर हो, but एक passage ये कह रहा हो कि global warming क्यों हमारे लिए खतरनाक है और क्यों बहुत बड़ा मसला है, और जो दूसरा पैसेज है वो ये कह रहा हो कि ग्लोबल वार्मिंग तो है ही नहीं, लोगों ने ऐसी बेवकूफ बनाया हुआ है आपको, राइट? और फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो ये होंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि जी ऑथर ए की ओपिनियन में और ऑथर बी की ओपिनियन में क्या चीजें सिमिलर हैं, क्या चीजें डिफरेंट हैं, एंड हाउ वुड द ऑथर ऑफ पैसेज 1 respond to the author of passage 2, how would the author of passage 2 respond to author of passage 1, etc etc, right? So ये आपके पास 5 passages total आएंगे जिसमें आपके पास 52 questions होंगे, and 52 questions is a lot of questions obviously, and और टाइम सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं 65 मिनट्स है। 65 मिनट्स इज शॉर्ट, राइट? आपको मालूम है कि 65 मिनट्स में करना इतना आसान नहीं होगा। ओके, सो यू हैव टू रीड फास्ट बिकॉज आपने पैसेज को पढ़ना है, और उसके ऊपर हर पैसेज में आपके पास तकरीबन कोई 10 से 12 सवाल होंगे, राइट? सो टोटल 52 क्वेश्चंस हैं, हर पैसेज में 10 से 12 सवाल होंगे और आपको वो आंसर करने हैं और जल्दी जल्दी करने हैं, व्हिच मींस दैट यू हैव टू हैव अ गुड रीडिंग स्पीड। ओके, आपने 4 से 5 मिनट मैक्सिमम आपने पैसेज पढ़ना है, और जो जितने 10-12 सवाल हैं वो आपने मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं, राइट? आपके पास टोटल ऑन एवरेज 12 मिनट हैं फॉर वन पैसेज, right? So you can't spend more than 4 to 5 minutes reading. You can't spend more than 5 to 6 minutes on answering the questions. Is this clear? So that's very important कि आप अभी से रीडिंग हैबिट डेवलप करें। आपके जो इंग्लिश टीचर हैं मिस्टर हाजिक, वो आपको समझाएंगे कि आपने रीडिंग क्या करनी है और किस तरह के मैगजीन्स पढ़ने हैं। कुछ मैगजीन्स मैं आपको रेकमेंड आज भी करूंगा, आप उनको पढ़ना शुरू कर दें। कुछ कंटेंट वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, आपको वर्कबुक भी कराएंगे, आपको समझाएंगे पैसेज को किस तरह से ब्रेकअप किया जाता है। रीडिंग की एक स्ट्रैटेजी है, राइट? वो किस तरह से आप पैसेज पढ़ेंगे वो समझाना हमारा काम है। बट प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप
सेंटेंस पढ़ते हैं और उसकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते, तो वो तो आपको कोई भी दुनिया का टीचर नहीं सॉल्व करके बता सकता। वो आपको समझना है कि ये लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल होती है, एंड देन यू हैव टू बी एबल टू comprehend the question and then answer questions on the basis of your comprehension. तो अगर आप रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो you can't expect to do well in an actual test. आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी उस वजह से नहीं हो सकेगी। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें, राइट। जो सेकंड सेक्शन है आपका राइटिंग एंड लैंग्वेज सेक्शन वाला, ये सेकंड वाला सेक्शन है, इसमें भी आपके पास 4 पैसेजेस हैं, राइट। सो यू हैव 4 पैसेजेस हियर। पहले वाले में 5 पैसेजेस थे, दूसरे वाले में 4 पैसेजेस हैं। तो ये जो 4 पैसेजेस हैं, इसमें क्वेश्चंस कम हैं, इसमें 44 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, और टाइम भी ऑब्वियसली बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स। सो यू हैड 65 मिनट्स हियर बट यू हैव ओनली 35 मिनट्स हियर। अगेन यहाँ पे भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फर्क क्या है पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में? फर्क ये है कि पहले सेक्शन में आपने पैसेज पढ़ना है और उसके बेसिस पे जो सवाल पूछे जाएंगे आपने उनका आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये पूछ सकता है कि यार व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, और व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, या कोई वो वर्ड अंडरलाइन कर देंगे और वो कहेंगे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट to the meaning of the word that is used in this particular context, right? So affected, for example, the word affected, AFFECTED, affected का word कहीं अंडरलाइन हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि affected का मतलब यहाँ पे क्या है, और उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। Now you know that affected का मतलब होता है the past tense of affect, having an effect on something, right? So affected is the past of affect. But affect के बहुत सारे मतलब और भी होते हैं। एक मतलब होता है pretend करना, जैसे एक्टिंग करना कि मुझे कुछ हो रहा है, ओके। सो द पर्सन वाज पुटिंग ऑन एन अफेक्टेड परफॉर्मेंस, अ प्रिटेंडेड परफॉर्मेंस, यानी कि वो रियल लाइफ उसको कुछ नहीं हो रहा था बट वो एक परफॉर्मेंस दे रहा था उसको, राइट। अगर आपको मतलब ही नहीं पता कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कह रहा है तो आप गलत मतलब बात करके आ जाएंगे। सो इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि आपको वर्ड्स में कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। ऑन द अदर हैंड, ये जो आपका नीचे वाला जो सेक्शन है, इसमें राइटिंग और लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही होती है। आपको ये बताना होता है कि ऑथर ने जो पैसेज लिखा है उसमें उसने क्या गलतियां की हैं और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। कहीं पे सवाल पूछेगा कि जी व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ कंबाइनिंग सेंटेंस 4 विद सेंटेंस 5, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपने बताना है कि सेंटेंस 4 और 5 कंबाइन करने का बेस्ट मेथड क्या है। कहीं पे ग्रामर अंडरलाइन की गई होगी और आपने बताना होगा कि वो ग्रामर ठीक है या गलत है। कहीं पे गलत प्रोनाउन यूज कर लिया, सब्जेक्ट सिंगुलर था मगर वहां पे जो प्रोनाउन यूज किया वो प्लूरल इस्तेमाल कर लिया, या वाइस वर्सा, सब्जेक्ट प्लूरल था आपने सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लिया। बहुत सारी ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो आपको सिखाए जाएंगे हमारे कोर्स में, और आपको उनको इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना होगा, राइट। सो दिस हैज मोर टू डू विद सेंटेंस करेक्शन एंड करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज। इसमें ये सवाल नहीं आ सकता कि ऑथर का प्राइमरी पर्पस क्या है, ये सवाल इसमें नहीं आएगा, ये सवाल उस पहले सेक्शन में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो बोथ सेक्शंस हैव अ डिफरेंट पर्पस एंड दैट्स हाउ द डिफरेंस इज, ठीक है जी। इन दोनों सेक्शंस को जब आप कंबाइन करेंगे so आप देख सकते हैं you have 52 questions here and you have 44 questions here, so that's a total of 96 questions, okay। और 96 questions के जो टोटल मार्क्स हैं वो 800 मार्क्स हैं, 800 पॉइंट्स, राइट। तो जो सैट का स्कोरिंग सिस्टम है वो ये होता है कि आपका स्कोर, मिनिमम स्कोर जो होता है वो 200 पॉइंट्स होता है और मैक्सिमम स्कोर जो है वो 800 पॉइंट्स होता है। सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग, फॉर एग्जांपल, that is worth about 10 points approximately, okay, not exactly but approximately 10 points, right? So in that context you need to make sure कि अब आपको मालूम है कि अगर आपने 10 सवाल गलत किए तो आपके तकरीबन 50 से 60 नंबर कम हो जाएंगे। Instead of scoring in 800 you'll end up scoring maybe 730 or 720, okay, on getting those 10 questions wrong. So the score falls pretty quickly, okay। So you want to make sure कि यार अगर आपने 700 हिट करना है, you want to make sure कि यार आपके 700 पॉइंट्स आ जाएं, तो आपकी जो 96 क्वेश्चंस हैं, 96 क्वेश्चंस में मैक्सिमम आप गलती कर सकते हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन की गलती कर सकते हैं, ओके। अगर आप 10 से 12 ज्यादा गलत करते हैं so what's going to happen is that you end up with a score which is less than 700 points. So you need to make sure that you get a lot of questions right to get that target of 700. Why is 700 so important? दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे सकती हैं as long as आपका मैथ में भी 700 आ जाए और अंग्रेजी में भी 700 आ जाए। कोशिश करें कि मैथ में आपका 800 आ जाए करीब से करीब, ओके, और अंग्रेजी में कम से कम 700 आ जाए, and then you can get into the top universities in the world without too much problem, plus you can get a scholarship as well. But if you get a score like, what people do is people don't put in a lot of effort, they end up with scores like 1250, 1310, मतलब 1300 is still all right, but anything less than 1300 in my opinion is too little, okay। For example, IBA है, IBA कहता है कि आपको अगर हमारे पास हमारा टेस्ट एग्जाम करवाना है तो आपको 1270 पॉइंट्स चाहिए, ओके। अब 1270 पॉइंट्स में वो कहते हैं कि जी मिनिमम आपके पास इंग्लिश में 600 होना चाहिए और मैथ में 670 होना चाहिए, राइट।
That's the minimum score that you need to get into to get an interview. Because टेस्ट तो एग्जाम हो जाएगा, इंटरव्यू एग्जाम नहीं होगा. बट ऑन द अदर हैंड आईबीए में अगर आपका स्कोर 1450 है एसएटी का, अगर आप सैट के बेसिस पर अप्लाई करते हो और आपका स्कोर 1450 है, तो आईबीए आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली एडमिशन ऑफर कर देगा. आपको कहेगा ठीक है जी, ग्रेड सबमिट करें एंड दैट्स इट, यू डोंट नीड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एज वेल. सो व्हाई इज दैट सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन अ प्लेस लाइक आईबीए फॉर एग्जांपल, जब वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करते हैं, तो अगर वो 100 स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, तो 100 में से सिर्फ 40 को या मैक्सिमम 50 को एडमिशन ऑफर करते हैं. ओके, तो अगर आपने 1270 1280 किया तो आपका टेस्ट एग्जाम हो गया, और इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. पर अगर आपने 1450 कर लिया तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आनी, आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाना है, आपकी वैसे ही जान छूट जानी है. यू अंडरस्टैंड दैट? सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज टारगेट समथिंग लाइक अ 1450 or a 1500 so that you don't have to worry about being called for interviews or waiting too long or to be put on a wait list, etc. Do you understand that? So target should be 1450 or 1500 कम से कम. Is this clear? Okay. So ये आपका English section हो गया जी. Do you have any questions here to ask me? Let me see if I can pull up a SAT test immediately and show you what it looks like. Hold on a second. Let me just find it. I should have it here. Okay, I'm going to show you a copy of an actual test. Okay, so those of you sitting at home, you should be able to see it now. Can you see it? Please confirm if you can. Anusha, Aisha, and Sania. Can you please confirm if you can see the test? Okay, good. Thank you. Right, so this is section number 1, reading test. And this contains 5 passages. Remember that? Okay. And you see, you have this first passage, which is from a story. Okay. And how long is the passage? This is about 60 lines. Okay. And then you have questions from 1 till 10 based on those questions. You see question number 10, as used in line 50, the word bearing most nearly means what? तो कॉन्टेक्स्ट का जवाब देना है कि इसका मतलब बेरिंग. अब आपको मालूम बेरिंग के बहुत सारे मतलब होते हैं. एक तो बेरिंग आप यूज करते हैं मशीन्स के अंदर, बेरिंग डाल देते हैं, राइट. बट बेरिंग जो है वो मैथमेटिक्स में भी होता है कि आप किसी तरफ बेरिंग की तरफ जा रहे होते हैं, कोई एंगल हो जाता है, राइट, वो मैथमेटिक्स का बेरिंग हो जाता है. मगर बेरिंग जो है लिटरेचर में किसी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होती है, उसको भी बेरिंग कहा जाता है. सो बेरिंग के बहुत सारे मतलब है, राइट. अब आपने देखना है कि यार यहाँ पे कैरिंग है, अफेक्टिंग है, यील्डिंग है, एंड्योरिंग है. So you need to know the meaning of what is enduring, what is yielding, what is affecting, what is carrying. In that context, then you have to go back and see. अच्छा लाइन 50 की बात कर रहे हैं तो लाइन 50 में जाकर आपने पढ़ा कि वहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया और इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा वर्ड बेस्ट हो जाएगा. जहाँ पे इसका रिप्लेस वर्ड बेस्ट हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. Do you understand this? Okay. इसी तरह से look at number 5. Number 5 कहता है the narrator indicates that many previous explorers seeking the North Pole have what? Have perished in the attempt, have made surprising discoveries, have failed to determine its exact location, or had different motivations than his own. Now, unless and until you read carefully कि उसने क्या पुराने explorers का जिक्र किया था और क्या बताया था, उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने क्या सोचा, you will not be able to answer this question. और फिर question number 6 क्या कहता है? Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? तो जो आपने पिछले question में जो आपने आंसर दिया है, तो आपने किस बेसिस पे वो आंसर दिया है, क्या आपके पास एविडेंस था, कहां से वो एविडेंस आपने ढूंढा है. सो ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी लाइंस में उस बात का एविडेंस मिल रहा है जो आपने पिछले केस में आंसर किया है, राइट. सो आपने यहाँ पे इन्फ्रेंस करनी है. इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस ये होता है कि मैं आपको कहीं पे कोई बात इनडायरेक्टली हिंट करूं और आपने उसको समझा, इन्फर किया, अखज किया. ओके, तो वो आउटराइटली नहीं कहा जा रहा बल्कि उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है. और जब आपको इशारा किया जा रहा है तो देन आपने, अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपका नाम क्या है बेटा? अमान. अमान. ओके, सो अमान ने जो है वो एक मास्क लगाया हुआ राइट नाउ, राइट.
या आपने भी मास्क लगाया हुआ है, तो मैं ये इन्फर कर सकता हूँ आपने भी लगाया हुआ है, तो मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि इन लोगों को तो अपनी हेल्थ के बारे में शायद ज्यादा कंसर्न है। ओके, अब हो सकता है जरूरी ना हो सकता है इन्होंने को किसी ने फोर्स किया हो और ये जबरदस्ती पहन के आए हुए हो, बट ये भी हो सकता है कि वो उनको ज्यादा कंसर्न भी हो। सो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि यार बिकॉज ही इज वेयरिंग अ मास्क दैट मींस ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ देन मी because I'm not wearing a mask. Do you understand that? So that is the kind of things that we infer. So we make inferences a lot in regular life. Passages में भी आपको inference करने का मौका मिलता है because the author uses certain words that point towards something, right? So this is the kind of questions that you have. So as you can see, the passage 1 हो गया. Passage 2 आप देख सकते हैं. Okay, this passage says we are not witnessing the abandonment of suburbs or a movement of millions of people back to the city all at once. The 2010 census certainly did not turn up evidence of a middle class stampede to the nation's cities. The news was mixed. Some of the large cities on the East Coast tended to gain population, albeit in small increments. Now, this passage is about a certain social phenomenon. Okay, और आप देख रहे हैं कि शुरू में टॉप पे ही जो हिस्सा है जहाँ पे मैंने जिसको पढ़ने की जहमत नहीं की, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है. ये एक इंट्रोडक्शन होता है that tells you what the passage is about. और उसको पढ़ना इसलिए जरूरी होता है because if you don't read this then you will not have a context in terms of how to read, and then it will cost you time and then points as well. So make sure that you read this italicized part as well, जो ये है हिस्सा. Okay, all of this is very important. Okay, you need to read this as well. Got it? Okay, and that's the introduction, and then you start reading the passage again. Isme bhi you will see that the questions are then followed after the passage. You see how long this passage is. This is a total of 90 lines. Okay, and then what you have is you have a chart. Remember I told you some passages have charts as well. So this one has two charts. There is a pie chart and there is a bar chart. Okay, and this will give you information about something discussed in the passage. अब population का जिक्र था तो हो सकता है इसमें population को breakup किया हुआ. For example, आप देख रहे हैं pie chart में उसने जो है ना वो दो हिस्सों का जिक्र किया हुआ है. There is on the left hand side a non-metro, a small metro and a large metro. To 2010 population shares by metro size. So वो आपको ये explain कर रहा है कि metro के sizes में कौन से size में ज्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पे लोग कम रहते हैं. और फिर सीधे हाथ पे आपके पास bar charts हैं और इसमें आपके पास growth rates हैं for 3 decades, 1980 to 1990, 1990 to 2000, and then 2000 to 2010. And then you have the growth rates for 3 kinds of cities: large metro, small metro, and non-metro. अब सवाल क्या होंगे? कुछ questions ऐसे होंगे जहाँ पे ये कहा जाएगा कि जो आपको ये डेटा दिया गया है, इस डेटा के बेसिस पे ऑथर की जो बात है वो सही है कि नहीं है, या क्या ये डेटा ऑथर की बात को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, या क्या ये डेटा इस डेटा में कौन सी ऐसी चीज है जो कि ऑथर की बात को वीकन कर देती है, वगैरह वगैरह. तो सारे क्वेश्चंस इस पे नहीं होंगे, बट 3 से 4 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे जहां पे डेटा को आपको साथ में चेक करना होगा. सो नाउ यू हैव द चैलेंज ऑफ रीडिंग फास्ट एंड आल्सो एनालाइजिंग डेटा अलोंग विद इट एंड देन आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट. सो यू माइट से कि यार डेटा का रीडिंग में क्या ताल्लुक है? वेल, द आइडिया इज कि सैट ये चाहता है कि आप सिर्फ रीडिंग ना करें बल्कि आप साथ में एनालिसिस भी करें, बिकॉज यूनिवर्सिटीज में जब आप जाते हैं तो आपको रीडिंग के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको साथ में बहुत सारे ग्राफ्स को भी देखना पड़ता है, और वो चीज वो स्किल आपको यहाँ पे चेक करना है. ओके, सो दैट इज व्हाट दे चेक हियर. And as you can see, there's a lot of questions here. तकरीबन कोई 11 सवाल थे इस passage पे. And then you have passage number 3, and then you have passage number 4, and then you have passage number 5. Now you see passage number 4, it says passage 1 here. Okay, it says questions 32 to 41 are based on the following passages, and then you have passage 1. So passage 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर passage 1 आया तो फिर नीचे जाके दूसरा passage 2 भी आएगा. So if you go down, you see there's another passage here, passage number 2. Right? एंड दोनों पैसेजेस जो हैं वो सिमिलर चीजों के ऊपर होंगे, बट हो सकता है सपोर्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, ये भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू. सो कुछ भी हो सकता है. यूजुअली जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू है. राइट, गॉट दैट? सो ये आपका हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एक और लास्ट पैसेज आप देखेंगे, पैसेज नंबर 5 इधर आ गया. एंड देन यू हैव अगेन यू सी देयर इज अ बिट ऑफ डेटा ऑन दैट. एक आपके पास चार्ट मौजूद है और ये उसके ऊपर बेसिस आपने आंसर करना होगा. सो दैट्स द एंड ऑफ सेक्शन 1. इट सेज स्टॉप. And if you finish before time is called, you may check your work on this section only. Do not turn to any other section. So आपको जो टाइम दिया जाएगा वो सेक्शन वाइज दिया जाएगा. अगर आपने पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप वहां सुकून से बैठ जाएं, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं. Then you go to the next section. This is the writing and language test. 35 minutes and 44 questions, right? And you go below, you see the first passage says questions 1 to 11. यहाँ बड़ी डेमोक्रेटिक किस्म की डिवीजन होती है. हर पैसेज में 11 सवाल ही होते हैं. ना 10 होंगे ना 12 होंगे, हमेशा 11 ही होंगे इस वाले में. ओके, पिछले में ऐसा नहीं है बट इसमें ऐसा है.
और आपने देखा कि it's a passage known as Ghost Mural, and it says in 1932 the well-known Mexican muralist David Alfaro Sequeiros was commissioned to paint a mural on the second-story exterior wall of a historic building in downtown Los Angeles. Sequeiros was asked to celebrate tropical America in his work. He accordingly titled it America Tropical. Now, इसमें देखा कि इन्होंने underline किया हुआ है इस section को, he accordingly titled it को, and ये आपने underline किया हुआ है question में, और साथ में यहाँ number 1 लिखा हुआ है, which means that the first question is from here. Okay, and you look at the first question right here. And the question here says, question 1, कुछ लिखा हुआ नहीं है, just says number 1. It says option A says no change, option B says which he accordingly titled, C says accordingly he titled it, and D says it was titled accordingly. So basically करना कुछ नहीं है, आपने ये जो लिखा हुआ है he accordingly titled it, आपने फैसला करना कि ये as it is ठीक है या one of these options B, C and D जो है वो ठीक होंगे इस केस में. और अगर आपको इसकी grammatical rules पता होंगे तो if you know the rules you will know कि यार ये जो original sentence है, Sequeiros was asked to celebrate tropical America in his work, comma, he accordingly titled it America Tropical. यहाँ पे एक गलती है जिसका नाम होता है run on sentence, और उस run on sentence को remove करने के लिए आपको यहाँ पे एक modifying clause चाहिए जो कि option B देता है, तो उसका जो correct answer होगा क्वेश्चन का वो B होगा. Now obviously I know it because मैंने ये सारे rules पढ़े हुए हैं कि SAT की grammar के rules क्या क्या हैं. So जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह में कौन से सेंटेंस में क्या गलती होती है, उसको कैसे फिक्स करना है, and then eventually you will be able to fix it as well. So there are questions of grammar, there are questions of using the correct word, etc., etc. And which, if you look at question number 4, it says which choice best connects the sentence with the previous paragraph. So option A says no change, option B says कि या तो आप ये लिख लें या ये लिख लें या ये लिख लें. So आप you have to read in context and then identify कि कौन सा sentence जो है वो इस sentence को पिछले से best तरीके से connect कर देगा, right? So you have to decide accordingly on that. So there are rules for that, and when you read in context, you understand that. So you see there's a difference of the previous section, which is to answer questions based on what is given in the passage, versus यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने उसकी grammar को fix करना है, इसकी effectiveness को fix करना है, इसकी language को precise करना है. समझ में बात को? So that's the difference between the previous passage, previous section and this section. और ये आपने देखा कि ये total तकरीबन exactly 4 passages होते हैं with a total of 44 questions with very similar questions. और काफी repetitive भी हो जाता है eventually. You know, it's the same thing going on over and over and again. 2 passages मेरे हिसाब से काफी होते हैं, but for some odd reason they have 4 passages taking the same rules again and again and again. So it becomes an endurance test कि यार अब आपको आपके अंदर कितनी endurance है, आप कितना तेज काम कर सकते हैं और कितना persistently अपने आप को focused रख सकते हैं. Okay, because obviously बात है इतना सारा पढ़ना और उसको आंसर करने में इंसान को फिर जो है ना वो थकन महसूस होती है, फिर नींद आना शुरू हो जाती है, right? So there you go. Now the third section, okay, is the math section. As you can see, this is a math test, no calculator, 25 minutes and 20 questions. So as you can see, बहुत कम time है, सिर्फ 25 minutes है, और that's a lot of questions, 20 सवाल है, and the important thing is कि calculator allowed नहीं है, there is no calculator. So इस section में आप calculator use नहीं करेंगे, नहीं कर सकते. अगर वो देखते हैं तो आपका टेस्ट कैंसिल कर लेंगे. इसमें हमेशा कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शुरू में देते हैं, यहाँ नोट्स मौजूद हैं, और ये रेफरेंस के फॉर्मूलाज दे देते हैं, बस इतने ही देते हैं. This is all the formulas that you get, mainly geometry के formulas है, ठीक है ना? So they won't tell you compound interest का formula क्या है, they won't tell you कि speed कैसे calculate की जाती है, they don't tell you averages का formula क्या है, right? But they do tell, they won't tell you कि coordinate geometry में distance between 2 points का formula क्या है या midpoint कैसे निकालते हैं, वो सब formula नहीं देते, बस कुछ तबर्रुकन कुछ formula वो आपको दे देते, right? तो ये भी आप याद ही कर लें यार, इतनी कम formula है, right? So better you learn all the important formulas, okay? And then you have the questions. There are a total of 20 questions as I mentioned, and हर पेज पे hardly 3 से 4 सवाल होते हैं. There is enough space on the question paper ताकि आपको rough sheets की जरूरत ना पड़े. आपने जो भी solution करना है वहीं पे करना है, आपको extra rough sheets नहीं मिलेंगी. So you have some very easy questions to begin with. Question number 1 would be a very straightforward question, generally speaking. Questions 1, 2, 3, 4. जो first page होगा उस पे आसान से questions आते हैं, and then as you move forward, you get tougher and tougher and tougher problems. Okay, so as you can see, 1, 2, and 3, and 4 are very basic algebra problems. If you move on, you get tougher problems,
You get longer problems, as you can see. Okay, and then but they are still all multiple choice. Okay, आप देख रहे हैं सारे multiple choice आ रहे हैं until you reach question number 15. Okay, जब आप question number 15 पे पहुंचोगे, that is the last multiple choice problem. So आपने देखा ये 14 आया और ये 15 आया. 15 is also a multiple choice problem, and these are supposed to be the toughest problem in the first section. Question 13, 14, 15 will be the toughest questions in that section. उसके बाद में जो अगला इसी सेक्शन के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, उसमें आप देखोगे कि आंसर ऑप्शन नहीं है. ये डायरेक्शंस मौजूद आ गई, लिखा हुआ है for question 16 to 20 solve the problems and enter your answer in the grid as described below on the answer sheet. So there's a certain way that you answer the questions. एक grid दिया जाता है, उसमें आपको अपना आंसर लिखना होता है. We will explain to you how to use these boxes, but basically question 16 to 20 there are no answer options. So if you look at question number 16, ये क्वेश्चन मौजूद है आपके पास लेफ्ट साइड पे, and there are no answer options. There is no A, B, C, D, right? Similarly, question 17, there are no answer options. Question number 18, there are no answer options, and no answer options for 19 or 20. So you have to then write down the answer yourself. यहाँ पे भी negative marking नहीं होती, multiple choice में भी negative marking नहीं है, और यहाँ पे भी negative marking नहीं है. Okay? So out of the 20 problems, 15 problems are multiple choice, and 5 questions are without multiple choices. And section 3 यहाँ खत्म हो जाता है. And then if you go to section number 4, it is also a math test, but in this test you actually are allowed the use of a calculator. आप देख सकते हैं there is a calculator allowed here, okay, and you can use a calculator without any problems. You have more questions here. You have a total of 38 questions, and you have almost 1 hour, 55 minutes, 5 minutes less than 1 hour. Got it? So you have more time per question as well. So you would think that these questions are tougher. Yes, they are slightly tougher, but they're not very tough. Okay, so they are slightly tougher, yes, apart from a few questions. So you can see that शुरू के questions काफी आसान होंगे. Again, यहाँ पे भी rule यही है कि जो 38 questions total थे, उस 38 में से 30 questions जो हैं वो आपके MCQ वाले होंगे, और 8 questions जो हैं वो आपके non MCQ होंगे. So you have 30 plus 8, 30 with MCQs, 8 without MCQs, right? So that is what the entire test looks like. Again, the SAT is in increasing order of difficulty. इसका मतलब ये है कि as you go forward, the test becomes tougher and tougher and tougher progressively. So जो शुरू के जो questions आपके होंगे इस section में, for example, जो शुरू के 4-5 सवाल होंगे वो काफी straightforward से होंगे, फिर medium level questions आना शुरू होंगे, and then when you reach about 20 onwards, you get tougher questions, and 25 onwards will probably be the toughest questions. And then you go up to number 30, which is going to be the hardest question. And then 31 onwards till 38 onwards, it starts off again, easy, medium, hard. Okay, that's the way the test is designed. Is this clear? Any confusion? आप में से कितनों ने पहले कभी ये टेस्ट देखा नहीं था? Never seen it before. सबने देखा हुआ है इस तरह का टेस्ट? प्रैक्टिस करके आए हैं, आपने नहीं देखा हुआ था? Now that you have an idea, okay. Acha, and then the test ends. As you can see, if I move towards the end, you will notice when I reach question number 30. Let me just take you there. Okay, so that's question number 30. ये आखिरी सवाल है जो multiple choice वाला है, और उसके बाद में फिर you have again non-multiple choice questions. You see there are no multiple choice questions here, no options. You have to solve it and calculate the exact answer yourself. Okay, got it? और ये आखिरी 8 सवाल होंगे. Understood? Okay, so now let's go back and talk about what is the syllabus like, right? So okay, people at home, I hope you can see this. Do you have any questions to ask me at this point? Those of you sitting at home, any questions to ask me? You can respond in the chat window if you like. Okay, so verbal section ke baad, as I had mentioned to you, there's a math section. Okay, and you can see there are 15 MCQs and 5 no MCQs. In the third section and the fourth section, you have 38. जिसमें 30 MCQs वाले हैं and 8 जो हैं वो बगैर MCQs, right? अच्छा जी, SAT ऐसे अब नहीं होता. There is no SAT ऐसे anymore. पहले होता था, but अब खत्म हो गया पिछले साल से. So अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है जी आपने SAT ऐसे वाला देना है, तो आप कहेंगे जी SAT ऐसे वाला होता ही नहीं, कैसे देना है, right? It's not possible. We can't do it. Okay.
Now you might wonder कि अच्छा यार, okay, how is the digital SAT going to be different from the paper based SAT? So paper based SAT का मसला ये है कि paper based SAT जो है वो limited dates पे होता है, limited time पे होता है, और बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रॉब्लम होती है, कभी आपने डेट मिस कर दी, कभी आपको सीट नहीं मिली वगैरह वगैरह। तो अब सैट ये कर रहा है कि यार जमाना वैसे ही डिजिटल हो रहा है, लोग कंप्यूटर्स पे कंफर्टेबल हो गए हैं पढ़ने के भी और एग्जाम्स करने के भी, तो might as well make them do exams on the computer. Okay, so that is where the digital SAT comes into play. इस साल 2023 में ये शुरू हो जाएगा इंटरनेशनली। ओके, अब पाकिस्तान में भी उसी टाइम पे लॉन्च होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो हमारी यही है, बट आई डोंट नो कि वो एग्जैक्ट टाइम पे लॉन्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि उनकी एग्जैक्ट प्रेपरेशन कैसी है। कोशिश तो वो कर रहे हैं, बट वो दुनिया भर में लॉन्च करना मुश्किल है। मेरे ख्याल से बेहतर होता है कि वो पहले अमेरिका में लॉन्च करते और वहाँ की लर्निंग को दुनिया भर में अप्लाई करते, और वो कर ही रहे हैं, वो दुनिया भर में लॉन्च कर रहे हैं और उसकी लर्निंग को वो अमेरिका में अप्लाई करेंगे। सो अमेरिका में वो लेट होगा, अमेरिका में वो 2024 में होगा, पाकिस्तान से 1 साल के बाद। ओके, ये दुनिया भर में जो होगा उससे 1 साल के बाद होगा। स्कोर्स विल बी ऑन द सेम स्केल, वही 1600 पॉइंट्स होंगे, 800 मैथ के, 800 अंग्रेजी के, राइट। टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अभी जो आपका करंट एसएटी एग्जाम है वो 3 घंटे का एग्जाम है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा तकरीबन 1 घंटे का है, मैथ कैलकुलेटर वाला सेक्शन जो है वो भी तकरीबन 1 घंटे का है, और जो बाकी 2 सेक्शन है राइटिंग वाले और मैथ विदाउट कैलकुलेटर वो तकरीबन आधे आधे घंटे के, तो मिला के टोटल तकरीबन 3 घंटे बन जाते हैं, राइट। सो ये इनका जो डिजिटल सेट होगा उसमें कैलकुलेटर, सॉरी आ जाइए, थैंक यू बेटा। जो डिजिटल एसएटी है उसमें क्या सीन है, उसमें एक तो यार मैंने ये डिजिटल एसएटी को दो वाला जगह लगा दिया, राइट। सो डिजिटल एसएटी जो है वो, उसमें मेन चेंजेस क्या क्या है, उसमें मेन चेंजेस ये हैं कि एक तो ऑनलाइन होगा, दूसरा ये है कि सेम स्केल होगा, तीसरा ये कि टाइम जो है वो 3 घंटे की जगह 2 घंटे हो जाएगा, चौथा ये है कि इट विल बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन अ लैपटॉप और अ टैबलेट एट अ टेस्ट सेंटर और स्कूल। तो आप घर बैठ के एग्जाम नहीं दे सकेंगे, आप ये नहीं कह सकेंगे कि अच्छा जी मेरा टेस्ट शेड्यूल कर दें, मैं 15 अक्टूबर को टेस्ट देना है और मैं घर में बैठ के दूंगा, वो नहीं हो सकता। ओके, आपको टेस्ट देने के लिए यू विल हैव टू गो टू अ टेस्ट सेंटर, वहां जाकर आपका एग्जाम होगा। ये बात अभी कंफर्म नहीं की है कि आपको अपनी डिवाइस लेके जानी पड़ेगी टेस्ट के लिए या वो खुद आपको डिवाइस प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज जो मैं इनकी वेबसाइट पे पढ़ा था वो ये था कि दे विल आस्क यू टू ब्रिंग योर ओन डिवाइस, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव डिवाइसेस, सो दे आल्सो सेड कि अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो देन दे विल lend you a device. Okay, but how will they lend it to you? पाकिस्तान में टेस्ट सेंटर्स के पास डिवाइसेस तो होना मुश्किल है unless they install computers and they fix those computers. तो मोस्ट वाली पाकिस्तान में ये होगा कि वो फिक्स कर देंगे कंप्यूटर्स को और आप वहाँ जाएंगे और वहाँ बैठ के आप सेंटर पे एग्जाम देंगे, जैसे कि यहाँ GMAT GRE के साथ होता है। वो सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, उनके टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और वहाँ बैठ के वो एग्जाम को उनके कंप्यूटर पे देते हैं, अपने कंप्यूटर पे नहीं देते, राइट। और सेक्शंस विल बी अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है? अडेप्टिव का मतलब ये होता है कि आप जैसे परफॉर्मेंस देते जाते हैं वैसे आपके हिसाब से टेस्ट मॉडिफाई होता है। सो व्हेन 5 पीपल टेक अ टेस्ट ऑन द सेम डे, दे विल नॉट ऑल गेट द सेम टेस्ट, सबके क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे और on the basis of how they respond they will get the next question. Okay, so if I'm doing really well, it's possible that I get more tough questions because the exam wants me to make a higher score, so it gives me more and more tough questions to see exactly where I end up with. If somebody is not getting a lot of questions right, then they give them easier questions, but उनका स्कोर भी वो लो सेट करता है। ऐसा नहीं है कि आप सही करेंगे तो आपको डिसएडवांटेज हो जाएगा, नहीं, आपको मुश्किल क्वेश्चंस तो दिए जाएंगे बट आपको फिर पॉइंट्स भी अच्छे मिलेंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि अगर आप गलती कर देंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, आपको आसान क्वेश्चन आ जाएगा, आपको आसान क्वेश्चन तो आएगा बट आपका स्कोर भी वो फिर लो सेट करेगा। सो दैट इज व्हाट एन अडैप्टिव टेस्ट इज, करेक्ट, राइट। अब इंशाल्लाह जब ये ऑफर होगा तो वी विल गो एंड टेक इट आवरसेल्व्स टू सी कि क्या पोजीशन है एंड यू विल गेट अ बेटर रिपोर्ट, but by that time inshallah we'll have better information. In the meantime right now you're just taking the test on the paper, right. क्या क्या इसमें differences मजीद हैं? It is reduced focus on endurance and speed. जी अभी करंट सेट में आपने देखा कि आपने बहुत तेज तेज पढ़ना है और बहुत ज्यादा पढ़ना है। जब डिजिटल एसएटी आएगा तो उसमें पैसेजेस इतने लंबे नहीं होंगे, उसमें पैसेज कंपेरेटिवली छोटे हो जाएंगे, राइट, बिकॉज वो टाइम भी तो कम कर रहे हैं ना आपका। सो मेरे ख्याल से वो 1 घंटा मैथ कराएंगे, 1 घंटा वर्बल कराएंगे, और 1 घंटा जो वर्बल होगा उसमें अगर उनको राइटिंग भी चेक करना है और रीडिंग भी चेक करना है तो उसका यही तरीका है कि वो शॉर्ट शॉर्ट पैसेजेस दें, वो लंबे पैसेजेस आपको नहीं दे सकते। एक और मसला ये होता है कंप्यूटर पढ़ना वैसे ही मुश्किल ज्यादा होता है, पेपर पढ़ना ज्यादा आसान होता है। लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रबल रीडिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज वो फोकस आपको रखना इतना आसान नहीं होता। पेपर पे तो आप एटलीस्ट मार्किंग कर सकते हैं, पेंसिल से आप लिख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, वो काफी चीजें फायदेमंद होती हैं जो कि कंप्यूटर पे आप इतना आसानी से नहीं कर सकते, राइट।
अच्छा जी, questions are more concise and straightforward. Math section will allow a calculator throughout. No calculator वाला section खत्म हो जाएगा, and now the entire test from the digital SAT will be the math will allow the use of a calculator throughout. Okay. मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ because अगर आप अभी आप normal SAT लेते हो, खुदा ना खास्ता अच्छा स्कोर नहीं आता, then your next test that you take will probably be in March, and when you do it in March, it will be a digital SAT. Okay. बट आई थिंक कि आप तैयारी अभी कर लेंगे तो एडवांटेज ये होगा कि आपका डिजिटल एसएटी कंपैरेटिवली आसान होगा, तो इस तैयारी से आपका स्कोर मेरे हिसाब से बेहतर आना चाहिए, ना कि वर्ड्स should be a better score inshallah. Got it? Okay. And scores will be available in days rather than weeks. Currently it takes about 3 weeks for the SAT score to appear. 3 हफ्तों में स्कोर आता है, बट जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका टेस्ट स्कोर इमीडिएटली भी अवेलेबल हो सकता है और 2 से 3 दिन के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है, बिकॉज चेकिंग ऑटोमेटिकली ऑलरेडी साथ साथ हो रही होती है, तो सिस्टम के अंदर आंसर्स तो बिल्ट इन होते हैं, आप मार्क करते हैं, सिस्टम को बदल जाता है आपने ठीक किया गलत किया, राइट? सो यू गेट द स्कोर वेरी वेरी क्विकली, दैट्स द एडवांटेज एज वेल. अच्छा जी, what is the math syllabus? Let's quickly talk about the math syllabus. By the way, I teach both math and verbal. मेरे दोनों subjects हैं. I've been teaching both subjects for about 20 years now. Math I've been teaching since 25 years. English I've been teaching since about 20 years. And my area of expertise is these exams. Okay, so I understand very clearly what these exams look like. Now this is the syllabus for the entire math section. इसमें आप देख सकते हैं कि algebra काफी है. इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसेंटेजेस, रेशियोज एंड रेट्स, स्टैटिस्टिक्स है, डेटा एनालिसिस है, स्कैटर प्लॉट्स हैं, लाइंस ऑफ बेस्ट फिट है, ज्योमेट्री काफी आता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आता है, 3D ज्योमेट्री भी आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है. कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपने नहीं पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है. आज सुबह को मैं अपने साइड बैच को कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रहा था, और उसमें से मेजॉरिटी को जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आता था, सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर देम बिकॉज दे हैड नो आइडिया व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाज. Linear and compound growth is a very important topic. Inequalities again काफी important है, काफी regularly आता है. Absolute values आता है. Functions, quadratic functions, domain and range, this is all very there. Trigonometry आता है. Trigonometry को बहुत ज्यादा heavy नहीं आता, कोई आपको बहुत heavy theorems prove करने को नहीं आएगा. Simple से straightforward से questions आएंगे. एक angle का एक trigonometric ratio बता दिया और कहा दूसरा निकाल लो. इसमें double angle formulas नहीं आएंगे. इसमें sin a plus b कैसे निकालते हैं वो नहीं पूछा जाता. इसमें जो trigonometry है बहुत आसान सी है कि ratios हैं क्या क्या और उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है. That's it. That's all you get in trigonometry. And how can you use that to figure out a missing side if you want, right? तो आपको एक ट्रायंगल बना दिया और क्या यार इसकी ये एंगल्स हैं, एक साइड की लेंथ दे दी, कहा बताओ भाई दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी. So you can use trigonometry to figure out the answer for that particular missing side as well, right? Probability again sounds like a big topic, but probability is not huge in SAT. It's a very small topic in SAT, and you get maybe 1 or 2 questions, and you get questions that are relatively easy to answer. वो आपको डेटा देंगे, डेटा टेबल के फॉर्म में मौजूद होगा, उसमें से आपने उठा के आंसर करना है. That's it. It doesn't take very long to answer. And then you have circle equations. This is a new topic that you might not have done. अगर आप intermediate की मैथ पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा, A level मैथ में भी सुना है, critical circle equations अब आ गया, recently introduce हो गया. SAT के अंदर circle equations जो है वो generally speaking center of circle निकालने के काम आता है. Points identify करने का काम आता है कि point circle के अंदर हैं या बाहर हैं. Area of circle निकालना हो equation के थ्रू तो उसके लिए काम आता है. So again, it's a topic that would take you about 1 lecture maximum to understand, and even that 1 lecture would be about an hour, maybe an hour and a half. Generally speaking, इतना नहीं लगता है, right? Verbal sections में you know that there's a reading part and there's a writing part. Reading के अंदर you have to have understanding of US and world literature, history and social sciences and the natural sciences. And writing के अंदर you need to know grammar rules and standard rules of English. And you need to, you'll have passages from these topics as well, right? So what to do now, right? What is the SAT score like? Okay, this is the scoring system I told you. The minimum score is 200 points and the maximum score is 800 points, right? और आपका स्कोर अवेलेबल कब होगा? आपका स्कोर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 हफ्ते के अंदर अवेलेबल हो जाएगा. How long is the score valid for? This valid for 5 years. Okay, anytime you want to use it, you take the test now. For the next 5 years, you can use it to apply to different universities. 5 साल के बाद वो expire हो जाता है, right? How to improve reading? Very important slide. इसकी एक screenshot ले लें आप लोग, बहुत काम आएगा आपको. आज घर जाएं, आज इस बारे में सोचना शुरू करें फौरन से और काम करना शुरू करें. कल आपकी पहली क्लास होगी. Obviously आज आपकी पहली क्लास नहीं है, आज एक सिर्फ orientation session था. My job was to introduce you to the course and to tell you what the course is going to be like. So please make sure that you start reading immediately. So आज घर जाओ, चाहो तो तुम वेबसाइट पे चले जाओ, खान अकेडमी पे जाके डाउनलोड कर लो,
और बहुत सारे प्रैक्टिस कंटेंट मौजूद है, फ्री टेस्ट मौजूद है, उनको डाउनलोड करो और उसके रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू करो। वेरी इंपॉर्टेंट आज से, ओके, डे वन से। बिकॉज अगर तुम रीडिंग नहीं करते हो, तुम्हें रीडिंग में प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें बहुत मसला आएगा। एंड रोज, क्योंकि सी नाउ यूर इन समर वेकेशन, तो ये पूरा जुलाई का महीना बाकी है समर वेकेशन का, सुकून से बैठ के आप रोज के 3-4 घंटे आप रीडिंग कर सकते हैं। यू सी व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई वाज अ मैथ टीचर, ओके। देन मिस्टर अनीस हुसैन को मैंने कहा एक दिन, मैंने कहा सर मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इट। तो ही सेड ठीक है, तुम तो मैथ के टीचर हो, तुम कैसे पढ़ाओगे? मैंने कहा मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बचपन से बहुत पढ़ता था किताबें। तो मैंने कहा आप मेरा टेस्ट ले लें। तो ही टुक अ टेस्ट ऑफ माइन एंड आई टुक दैट टेस्ट ऑफ माइन, आई स्कोर्ड वेरी हाईली। So he was like, "हाँ यार, I think you can become a teacher." So then I started training to become a teacher for English as well. The reason I became an English teacher very quickly and was able to train very quickly was simply because I was into a lot of reading. मुझे बहुत शौक था किताबें पढ़ने का। मेरे पास अपना जो किताबों का कलेक्शन है वो तकरीबन कोई 200-250 किताबों का कलेक्शन है मेरे पास, apart from your regular academic books, right? So and I'm member of a library. I read regularly. Okay, मतलब मेरे सबसे अच्छी जो टाइम पास है वो रीडिंग करना है। Okay, so it helped me a lot. Okay, it helped me overcome a lot of difficult reading as well. It helped me build my vocabulary. It helped me understand grammar. It helped me understand how language is used. And it also had my own writing capabilities. So I can also write very well now because I read a lot. Okay. So बड़ा जरूरी है कि आप reading की practice करें. Okay, and you can start off with easy reading. For example, अगर आपको reading का शौक नहीं है बहुत ज़्यादा, you start off with reading things like Reader's Digest magazine. आप तकरीबन एक हफ्ता रीडर्स डाइजेस्ट के ऊपर गुजारें, रोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप प्रैक्टिस करें रीडिंग की, और जब वो आपका एक फ्लुएंसी बिल्ड हो जाए, then you go on to read books like magazines like The Economist. Economist is a very important magazine. काफी अच्छे इसमें कंटेंट आता है। अच्छा, नाम से लगता है कि दिस इज ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, इसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज भी आ रहे होते हैं, बिजनेस इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे होते हैं। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू रीड दिस मैगजीन। ओके, इसकी पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल हो जाती हैं, आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा, राइट? सो वेरी इजी टू फाइंड दैट। एंड देन यू हैव दिस अदर मैगजीन, न्यू साइंटिस्ट। दिस इज अ मैगजीन दैट एसएटी रेगुलरली यूजेस to pick up content from. Okay, आपको बहुत सारे उनके जो आर्टिकल्स मिलेंगे, जो रीडिंग के आर्टिकल्स मिलेंगे, वो न्यू साइंटिस्ट के ही होंगे। ओके, सो लुक एट न्यू साइंटिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तीसरा है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। अगेन SAT picks up a lot of articles from here, and they test you on that. So if you have a habit of reading this, you will do really well. Got it? एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि मेक श्योर दैट यू रीड ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट केसेस हो, बट जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में जरा रीडिंग की हैबिट डालें। एंड आई गारंटी यू, अगर आप इकोनॉमिस्ट और न्यू साइंटिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट को रेगुलरली पढ़ेंगे, रोज के 3-4 घंटे पढ़ेंगे, तो आपकी सारा जो दुनिया में चीजें हो रही है सबके बारे में आप अपडेट हो जाएंगे। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज whenever you read a passage, they expect you to pick up the context very quickly. Let me give an example. जो आपको 5 पैसेजेस आते हैं, उसमें एक पैसेज जो होता है वो यूएस हिस्ट्री से ताल्लुक होता है। अब यूएस हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या रही हैं? यूएस हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं यूएस सिविल वॉर, यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यूएस की डिस्कवरी, और उसके बाद में हाउ पीपल सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सारे यूरोप से आए थे, वो आगे कैसे सेटल हुए, और फिर वो अमेरिका काफी बड़ा मुल्क है, पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट पे जाना आसान काम नहीं था, वो कैसे गए, राइट? तो ये पूरा जो यूएस हिस्ट्री है ना, क्योंकि हमने आपने नहीं पढ़ी हुई, हमें तो पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ाई गई है यहाँ पे, राइट? तो जब आप एक यूएस हिस्ट्री का आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जिसका आपको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ईस्ट कोस्ट क्या है, और ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में क्या फर्क है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? और उसके फिर ईस्ट कोस्ट का एडवांटेज क्या है, वेस्ट कोस्ट का एडवांटेज क्या है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? So if you have an idea about US history, you will be able to understand that passage much faster. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एक कल्चरल बायस आ गया। कल्चरल बायस क्या है कि जी टेस्ट एक्सपेक्ट करता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी यूएस हिस्ट्री के बारे में, तो व्हाई नॉट बिल्ड दैट नॉलेज बिफोर हैंड? व्हाई गो टू द एग्जाम एंड रीड दैट आर्टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ? ओके, फॉर एग्जांपल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इमेंसिपेशन। मालूम आपको इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? ओके, इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। ओके, द वर्ड इमेंसिपेट मींस टू सेट फ्री। So emancipation is freedom. अब किसकी फ्रीडम? तो यूएस कॉन्टेक्स्ट में इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स, उनके जहां जो स्लेव्स थे उनको फ्री किया गया सिविल वॉर के बाद, वो उसके इमेंसिपेशन। यूएससी कॉन्टेक्स्ट में
औरतों के हुकूक, women's rights or women emancipation, making sure that the woman was free of the household or of the influence of her male members of the family, right? ये बड़ा important उनके यहाँ पे रहा है, women's movements रही है. So if you have an idea of those things, as soon as you see the word emancipation, you will know कि या तो वो context of slavery होगा या वो context of women's rights होगा. तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी. Do you understand that? That's why मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो है ना एक लेक्चर जरूर कराता हूँ यूएस हिस्ट्री के ऊपर. But I explain to them what the entire US history is और उस पे related articles क्या क्या आ सकते हैं, right? And then you have a much better idea because then your reading becomes faster. Do you understand that? इसी तरह से साइंस हो गया. अब साइंस में क्या प्रॉब्लम है? साइंस में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे मुझ जैसे लोग जिनका साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं था. आई वाज नेवर वेरी गुड टू गुड इन वेरी गुड इन साइंस. In fact, in my O levels, I didn't study physics or chemistry or bio. What I studied was business. Okay, so when I started doing these passages about science, I would get lost in them. एक तो नाम बड़े बड़े होते हैं, scientific चीजों के नाम वैसे ही लंबे चौड़े होते हैं और अजीब अजीब से नाम होते हैं. Okay, so I used to get lost in that, and then I would have a tough time. एक तो मुझे वैसे ही fear था कि यार ये साइंस का पैसेज होगा ना मैं नहीं कर पाऊंगा. ओके, हाउ आई ओवरकेम दैट फियर वाज वेरी सिंपल. मैंने देखा यार छोड़ो, आई हैव टू स्टॉप बीइंग फियरफुल. आई स्टार्टेड रीडिंग द साइंस बेस्ड पैसेजेस, ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, राइट? जैसे आप मूवी देखते हैं जेम्स बॉन्ड की, बड़ी एक फॉर्मेट वाली मूवी होती है ना. शुरू में आपको देखेंगे जेम्स बॉन्ड आया, उसने 4-5 क्रिमिनल्स को मारा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, धमाके हुए, और फिर इवेंचुअली वो दिखाता है कि जी उसने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर टाइटल आता है जेम्स बॉन्ड की मूवी का. और फिर जेम्स बॉन्ड को कॉल किया जाता है दफ्तर में, जेम्स बॉन्ड साहब वहां जाते हैं, वहां जाके वो उनके जो चीफ हैं जिसको क्यू कहते हैं या एम कहते हैं, सो एम से वो मुलाकात करते हैं. एम उनको बताता है जी एक फलाना टेररिस्ट है, उसको अरेस्ट करना है. फिर वो अपने क्यू के पास जाते हैं. क्यू जो है वो उनका एक रिसर्च असिस्टेंट होता है जो उनको बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये चीजें बनाई है, तुम्हारी इस गाड़ी में बॉम्ब है, तुम्हारी घड़ी के अंदर ये एक पॉइजन है, वगैरह वगैरह. ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ मूवी का, राइट? यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम दैट जेम्स बॉन्ड मूवी. Exactly the same way in science-based passages. Very similar. They will have a certain format. You have to follow. Once you know what that format is, you can read much faster. Okay. So these are the kinds of things that can really help you become much better at your reading because you know how to approach that particular passage. Okay. So ये reading की habit अभी से डालना शुरू कर दें. Okay. Start reading from today onwards. Right. And look at line number 4. It says focus on becoming a more well-informed reader. Okay, well-informed से मुराद क्या है कि आपको पहले से अंदाजा है कि आप क्या पढ़ने वाले. That would mean you're more well-informed. Do you understand that? For example, if you gave an article about how Imran Khan's government lost a vote of no confidence, okay, to somebody from America, they will not understand it. They'll say ये क्या होता है? What is a no confidence vote? हमारा तो सिस्टम ही नहीं है पार्लियामेंट का, for example. Yeah, who is Imran Khan? Yeah, what is Pakistan? They don't know, right? On the other hand, आप किसी ऐसे को बताएंगे जिसके यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम है, किसी ब्रिटिश के पास चले जाएं, तो they will have a better idea. They might know Imran Khan कौन है because they watch cricket. They might know कि पार्लियामेंट सिस्टम क्या है because उनके यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम मौजूद है. They might know what no confidence is because उनके यहाँ no confidence vote होता है. So they have context. For them, the context makes it easier to understand. Do you understand that? That is why having a context is so important, right? And lastly, it says try cultivating opinions instead of simply being a passive recipient of facts. यानी सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने अपना opinion भी present करना है कि यार ये बात मुझे क्यों बताई जा रही है, इसकी implication क्या हो. Right? So I'm going to, this is where I enjoy doing reading comprehensions. Okay. Now that's basically that. So quick questions हैं आप लोगों के इस वक्त to ask? नहीं? Okay, so what are the books that you'll be using? You'll be using 5 books apart from full length tests. Okay, so आपको शुरू में पहले एक मैथ की बुक मिलेगी, बेसिक मैथ की, एक बेसिक इंग्लिश की बुक मिलेगी. Then you move on, you will get more books on English, and then you will get one more book on math, and then you will go on to full length test practice. So you get 5 books approximately, inshallah, and then you get full length tests to practice. वो आपकी क्लास में ही होंगे और फिर वो सब डिस्कस भी होंगे. Okay, अब इम्प्रूव करने का जल्दी तरीका ये है कि try to move faster than the class. Okay, अगर आपको आपके टीचर ने होमवर्क में 2 चैप्टर दिए करने के लिए तो आप 4 करके हैं. Okay, you move forward. आपको स्पेशली वो चीजें जो आपको पहले से आती हैं आप उनको जल्दी कर लें. Do you understand that? So if you finish it faster, you tell your teacher कि यार can I get the next book please? I've already finished this. Okay, and he gives you the next book and you work on that as well. So you move faster than the class. Try to make sure that you beat the class.
Okay, so that you're not held back by the class. Okay, on the other hand, if you're weak at math, then you should move with the class so that you don't end up with a situation where everything seems to be getting out of your hands. Do you understand that? Course in short time पे complete होगा, तकरीबन 3 महीने का course होता है ये. So you're starting now in July. So July का महीना, August का महीना and September का महीना, 3 महीने में ये पूरा course होता है इंशाल्लाह. और आपकी हफ्ते की कितनी क्लासेस होती हैं? आपकी हफ्ते की 5 क्लासेस होती हैं. ये आपका schedule है. ओके, मंडे से लेकर फ्राइडे तक. इसमें 3 आपके मैथ के सेशंस हैं, 2 आपके इंग्लिश के सेशन. गॉट इट? और ये बढ़ाई भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से if a batch is struggling in, let's say, math, we add the extra math classes. If the batch is struggling in English, then we add the extra English classes. If overall the batch is doing well, but there is a student or there are a few students who are struggling, then we add extra classes for those students just to make sure that they don't feel left behind as well. Okay, but it is important. क्या चीजें जरूरी है? Please make sure that you remember the following things. पहली बात, always make sure that you finish your homework. Okay, finish your homework on time. Okay, and then number 2, do extra practice as much as possible. Okay, 3, read every day for 2 to 3 hours every day. Okay, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जुलाई के महीने में, स्पेशली जब तुम्हारा स्कूल नहीं है. देखो, आई अंडरस्टैंड तुम्हारा भी क्या थॉट प्रोसेस होगा. तुम्हारा थॉट प्रोसेस ये होगा कि यार अभी तो मेरे समर वेकेशंस चल रहे हैं, मेरे सारे समर वेकेशंस खराब हो जाएंगे. ओके, समर वेकेशंस खराब नहीं हो जाएंगे आपके. कोई आपके समर वेकेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली आपने अगर जाया ही करने हैं बैठ के, तो जाया तो आप पूरी लाइफ कर सकते हैं बैठ के, राइट. बट ये जो महीना है आपके लिए बड़ा यूजफुल है. आप इस महीने को इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज आपको कुछ और नहीं पढ़ना, तो आप इस पे पूरा दिन अपने किसी भी रोक थाम के बगैर आप सैट के ऊपर फोकस कर सकते हो. इससे अच्छी आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते. ओके, अपना समर वेकेशन को इससे ज्यादा अच्छी तरीके से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से, राइट. अपनी पढ़ाई के मामले में एकेडमिकली ऑब्वियसली बात है, और तरीके इन्वेस्ट करने के हैं. आप किसी की हेल्प कर लें, चैरिटी कर लें, वो सब चीजें भी कर सकते हैं आप. बट राइट नाउ अगर अपनी एकेडमिक्स को इम्प्रूव करना है तो उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपकी हो नहीं सकती. सो माई स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यू इज प्लीज मेक श्योर that you finish your homework on regular basis, you do the extra practice, you read every day for 2 to 3 hours, and if you need extra help, okay, don't be afraid. So don't be afraid of asking for extra help. ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं. आपको अनीस हुसैन पे कोई ये नहीं कहेगा कि जी आपको 2 घंटे की क्लास दी थी, वो आपके लिए काफी है, इसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं है. ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा हमारे पास. ओके, सी अनीस हुसैन हैज बीन अराउंड सिंस 1989. दिस इज व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग एट हिज ओन प्लेस. अपने घर से शुरू किया था उन्होंने, अनीस साहब ने. और आज माशाल्लाह अनीस साहब के 8 कैंपसेस हैं. ओके, पूरे कराची में. So why are they 8 campuses? It's because of the fact that we put in a lot of effort behind our students. Okay, हमारे पास जितने टीम है सबको instructions हैं कि never say no to a student who needs extra help. कभी मना नहीं करना. Okay, because you've come here because you need help. Okay, that's the reason why you're here. Okay, so if you did not need the help, you wouldn't be here. So we will help you. But what will not happen is कि आप काम नहीं करो, राइट. पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाए, 2 दिन बाद आप आओ, सर वो मैंने उसको काम नहीं किया था, अब मुझे एक्सप्लेन कर दें. तो टीचर 1-2 दफा तो कर देगा, फिर वो नाराज भी होगा, वो कहेगा कि यार आप टाइम जाया कर रहे हो. सो मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दैट हैपन. इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा. ये जो आपको हैंड आउट दे रहे हैं, इनका नाम मिस्टर स्टैनली है. मिस्टर स्टैनली इज माय असिस्टेंट, एंड इन माय एब्सेंस इफ यू नीड एनी हेल्प देन यू कैन ऑलवेज कॉल हिम अप एज वेल. ठीक है जी, and he will give you that extra help. If you need extra classes वगैरह, you can ask him. He will tell you when you can get those extra classes as well. ठीक है स्टैनली. अच्छा जी, ये हमारे contact numbers हैं. You should take a screenshot of this. And इसमें college board के भी आपको numbers दिए हुए हैं. College board is the company that owns the SAT, that conducts the SAT. तो अगर आपने कुछ कोई मसला है, कोई वेबसाइट पे जाना है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं. और ये जो कस्टमर सर्विस का नंबर दिया हुआ है कॉलेज बोर्ड का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये इंटरनेशनल नंबर है. यू कैन ऑलवेज कॉल देम अप इफ यू हैव एनी नीड फॉर एनी एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम देम. बट इन मोस्ट केसेस आई विल बी एबल टू हेल्प यू एज वेल. मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा. मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और नंबर भी आ जाएगा, बिकॉज जब आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होंगे तो मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होऊंगा, तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा. इनफैक्ट आ चुका होगा या आ जाएगा. माई ईमेल एड्रेस इज salman@anishusain.com. इट्स रियली ईजी. अगर कोई भी काम हो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे
मेरे सेल फोन पे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर लें, ताकि मैं आपको इवेंचुअली जब मैं फारिग हूँ तो रिस्पॉन्ड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई क्वेश्चंस? कुछ भी नहीं, सब क्लियर है, सब सेट है, ग्रेट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम पढ़ाते हैं तो सारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं। हम पढ़ाते बोर्ड पे ही हैं। मुझे मजा नहीं आता टैबलेट से पढ़ाने का बहुत ज्यादा। आई एंजॉय टीचिंग ऑन द बोर्ड। तो जब मैं कराची में हूँ और वाइट बोर्ड मौजूद है तो मैं क्यों ना पढ़ाऊँ, राइट। कैमरा क्लास में लगा हुआ है, अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो क्लास रिकॉर्ड होगी, लाइव होगी। तो आपको लाइव जूम पे लिया जाएगा। अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो यू कैन टेक द क्लास ऑनलाइन एज वेल। हाइब्रिड मॉडल है, आपके क्वेश्चंस भी आंसर होंगे। हमारे पास हमेशा यहाँ पे एक स्पीकर पड़ा हुआ होता है, जिसमें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, एंड वी विल आंसर दैट क्वेश्चन टू यू एज वेल. All teachers will pay attention to you as well as the ones who are sitting in classroom. Okay, and then the lectures are recorded and uploaded as well. So you will get access to a portal. हम हमारा पोर्टल डेवलप हो चुका हुआ है टेस्टिंग फेज में. You will get access to the portal. Otherwise you will get access to the videos on some other, या तो हम Google Drive यूज करते हैं या हम Facebook ग्रुप्स यूज करते हैं, दोनों में से किसी एक में आपको इस्तेमाल किया जाए. And you will get regular, every class is recorded and uploaded on the same day usually. Okay, बहुत रेयर होता है कि वो उस वक्त अपलोड ना हो, वो बाद में अपलोड. ठीक है जी, that's that. कोई सवाल नहीं पूछना आप लोगों ने, पक्का? ये भी नहीं पूछना कि सर सलमान आपका कितना स्कोर आया था सैड में, नहीं पूछना ना, ना पूछो. मैंने कभी सैड दिया ही नहीं था, बिकॉज मेरा आईबीए में वैसे एडमिशन हो गया था. आई गॉट अ वेरी हाई स्कोर इन माय आईबीए एडमिशन टेस्ट. आई गॉट इनटू आईबीए, सो आई नेवर टुक द एसएटी, but I got a very high score in my math as well in the IBA test. So, and then generally my score level is around 1580, 1590 level, right? Okay, because I do this for a living, right? So I need to be at that level to be able to do this well, don't you think? है ना? ठीक है जी, चलें, that's about that. कोई और सवाल नहीं है, पक्की बात है? हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? कासिम जी, कासिम. कोई सवाल? मोहम्मद बिन कासिम. कोई सवाल नहीं. Okay, those of you sitting at home, the ladies that you were at home, I hope you were able to hear the entire session. And Anusha and Sania, there was a third lady, Aisha, she doesn't seem to be here. Were you able to hear me clearly, Anusha and Sania? You can unmute your mic if you like. Any question, beta? Sania and Anusha? Anything to ask? You've seen the class schedule? This is the class schedule. Okay, great. So tomorrow is going to be your first class, and tomorrow is English. Okay, Mr. Hazi will be teaching you. Please make sure that you understand कि math की classes 6:30 से 8:30 हैं, और English की class जो है वो 4 से 6. Is this clear? अगर आपको schedule में कोई problem है और कोई clash आ रहा है या कुछ मसला है, you can always talk to the staff outside, Mr. Stanley, and he will help you figure it out. Got it? All good? Okay, great. So you can start inshallah tomorrow with your first English class. Make sure that you get your books from the reception, okay? And then when you come to class, you should have your books with you. Got it? Talaji, take care. I shall see you tomorrow inshallah. I will be here. All the best.